गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लॉज ऑन जीएसटी। तो आपके पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नेंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है ये रूलिंग दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो पार्लियामेंट, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उनके पास दोनों के पास ये पावर है कि वो जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो अभी एक केस हुआ था कि गुजरात हाई कोर्ट ने रूल किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आईजीएसटी नहीं लगा सकती ओशन फ्रेट के ऊपर, जो इंडियन इंपोर्टर्स जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो हुआ क्या था कि सीबीडीटी जो है आपका आईटीसी, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का और कस्टम्स का है, सीबीआईसी, उन्होंने जीएसटी लगा दिया था 5% जो है वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो उसको जो है क्वैश करते हुए जो है गुजरात हाई कोर्ट ने इसको जो है वो हटा दिया था। अब इसी केस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जो है डिसीजन को सही ठहराया और उन्होंने बोला कि जो है यूनियन लेजिस्लेचर आपकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब आपकी स्टेट असेंबलीज, दोनों के पास इक्वल पावर्स है जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने के लिए। तो उन्होंने इसमें आर्टिकल 246A का भी जो है हवाला दिया कि यूनियन और स्टेट्स को हम इक्वल जो है वो ट्रीट करेंगे वाइल इनैक्टिंग लॉज ऑन जीएसटी। 279A आर्टिकल में भी उन्होंने बोला कि सेंटर और जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एक तरह से जो जीएसटी पर लॉ बनाने के लिए। जीएसटी काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी प्रीडोमिनेंस है। जीएसटी काउंसिल एक कोलैबोरेटिव डायलॉग है, उस पर दोनों जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो एक तरह से लॉन्ग रनिंग बैटल जो है वो अब ख़त्म कर दी है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रीएमिनेंस थी उसको ख़त्म कर दिया है, अब एक तरह से इक्वल फुटिंग पर ला के खड़ा कर दिया है स्टेट लेजिस्लेचर्स को और पार्लियामेंट को। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स जीएसटी काउंसिल को जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस होती हैं, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो उसके ऊपर लॉ बना सकेंगी। तो इससे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। आपके जो है गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक डिवीजन ने जो है एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनके इकोनॉमिक डिवीजन ने ये सोचा कि कैसे हम नेगेटिव कमेंट्री जो हो रही है इंडिया के ऊपर ग्लोबल थिंक टैंक द्वारा, मीडिया द्वारा, उसको हम कैसे जो है वो काउंटर करें ताकि हमारी सोवरन क्रेडिट रेटिंग जो है वो ख़राब ना हो। तो इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि सोवरन क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो इवन हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, संजीव सान्याल जी, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। तो क्योंकि आपका जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स आपका न्यूज़ में आ गया, तो उसके बारे में देखते हैं। 215 कंट्रीज़ को रैंक करता है। 6 डायमेंशंस हैं इसके: वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। ये 6 इंडाइसेस के ऊपर जो है ये रैंकिंग देता है कंट्रीज़ को। ठीक है, तो अब जो है ये इंडिकेटर्स जो है लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज, सिटीजन और एक्सपर्ट सर्वेस के बेसिस पर ये जो है रैंकिंग्स दी जाती हैं, और 30 इंडिविजुअल डेटा सोर्सेज जो है वो यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक वाइल मेकिंग दिस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीडिंग टेक्निक्स ऑफ बार्ब्स। तो बार्ब्स क्या है? आपकी फिश की स्पीशीज़ आप देखोगे तो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ जो है उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग शुरू की है ऑलिव बार्ब्स और फिलामेंट बार्ब्स की, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच चुकी है। क्यों पहुंच चुकी है? क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट फिशिंग हो रही है, इनकी हैबिटेट कंडीशंस में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। तो कुफोस जो है आपका केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट चलाया है ताकि इनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के जो है इनकी पॉपुलेशन को संभाला जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। तो आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है ये वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, आरएसवी इसको कहते हैं। अभी एक लैंसेट की स्टडी ये कह रही है कि 1 लाख डेथ हुई है इस वायरस की वजह से 2019 में। और आरएसवी का जो डिसीज़ बर्डन अगर हम इंडिया में देखें तो 5.3% जो है चिल्ड्रन जो है उनको ये वायरस ने अफेक्ट किया। और आरएसवी क्या है? आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। इसको ह्यूमन ऑर्थोनिमो वायरस भी कहते हैं। कॉमन है, बहुत ही कंटेजियस वायरस होता है और आपके इन्फेक्शन करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और नेगेटिव इसकी जो है सेंस है
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये। एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है यंग चिल्ड्रन में। 26% जो डेथ्स है वो हॉस्पिटल में हुई है आरएसवी की वजह से, ठीक है, ग्लोबली। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो आरबीआई ने ये सारे बैंक्स को और एटीएम ऑपरेटर्स को कहा है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल आपको फैसिलिटीज़ एटीएम्स पे अलाउ करनी है। क्यों करने को कहा है ये? क्योंकि आपको पता है क्लोनिंग हो जाती थी कार्ड्स की, और जो है कॉपी हो जाते थे कार्ड्स, तो उससे बचने के लिए, कार्ड को जो है एलिमिनेट करने के लिए जो है आरबीआई ने ये फैसला किया है कि सारे बैंक्स जो है अब से अपने एटीएम पर बिना कार्ड के जो है आपको कैश विड्रॉ करने की फैसिलिटी देंगे, ठीक है। सारे बैंक, सारे एटीएम नेटवर्क, सारे वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स जितने भी हैं उन सबको आरबीआई ने कहा है सर्कुलर में कि यूपीआई का इंटीग्रेशन करो, ताकि आपके जो है कार्ड की जो है वो रेलेवेंस खत्म हो जाए, कार्ड का यूज़ करने की ज़रूरत लोगों को ना पड़े, ठीक है। तो यूपीआई जो है उसका यूज़ करते हुए कस्टमर की ऑथराइजेशन की जाएगी और उसके ही बेसिस पर जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और आप एटीएम से पैसा बिना कार्ड के विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लगेंगे जो आपके नॉर्मल चार्जेस लगते थे एटीएम में, कि अगर आपकी 5 ट्रांजैक्शन फ्री थी या इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, तो वो आपकी 5 रहेंगी। मेट्रो सिटीज़ में 3 फ्री थी तो वो 3 रहेंगी। सब कुछ वही रहेगा, बस कार्ड इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है NASM-SR। तो ये NASM-SR क्या है? नेवल एंटीशिप मिसाइल, जिसको आप NASM SR भी कह सकते हो, ठीक है। तो नेवी ने इसको रिसेंटली टेस्ट किया है अभी बालासोर में, ओडिशा में। इसको DRDO ने बनाया। इसकी रेंज 55 किलोमीटर है, 385 kg इसका वेट है। सी ईगल मिसाइल्स जो है इंडियन नेवी के, उसको रिप्लेस करेंगे ये। और ये आपके MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में इसको जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें आप 100 kg तक का जो है आप वॉरहेड इसके साथ बांध सकते हो। 0.8 मैक तक की स्पीड ये जो है वो ले सकते हैं। 3 किलोमीटर का इसका ऑल्टीट्यूड लॉन्च है, ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी है, और 5 मीटर्स अबव द सी लेवल ये स्किम कर सकता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें देखने को मिला, अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने रशिया की एक बहुत बड़ी वॉरशिप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एक मिसाइल से। तो ये जो NASM-SR जो है, ये वैसे तो छोटे मिसाइल आपको लगेंगे, लेकिन ये पेट्रोल बोट्स जो हैं उसके लिए आपको लगेगा कि उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। बट हमने देखा है मॉडर्न नेवल कन्फ्लिक्ट में कि इवन छोटा सा एक मिसाइल स्ट्राइक भी जो है बड़ी से बड़ी शिप को जो है वो सिंक कर सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसकी क्या है? क्योंकि ये हल्के हैं तो इसको हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो स्मॉल वॉरहेड साइज़ है वो एक ब्लेसिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड बी डे। तो वर्ल्ड बी डे आपका 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ये ऑफ कोर्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है, क्योंकि ये स्लोवेनिया का एक इनिशिएटिव है, और ये आपके जो है इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बी डे जो है 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया गया है अभी रिसेंटली। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्वीट रेवोल्यूशन लाने के लिए कैसे काम कर रही है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लेकर आई है गवर्नमेंट। 5 बिग रीजनल और 100 स्मॉल हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स के लिए टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं। हर साल हम लगभग 1.25 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ हनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है क्या? इसके लिए 500 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया 3 सालों के लिए, और इसको आत्मनिर्भर भारत स्कीम पैकेज के अंदर अनाउंस किया गया था। गोल आपका यही है, स्वीट रेवोल्यूशन लेके आना कंट्री में, ताकि हम बी कीपिंग इंडस्ट्री को कैसे जो है वो ग्रो कर सकें, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हम कैसे जो है जनरेट कर सकें बी कीपिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। वर्ल्ड बी डे जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोवेनिया ने प्रपोज किया था 20 मई की वर्ल्ड बी डे बनाना चाहिए। स्लोवेनिया जो है वो बी कीपिंग इंडस्ट्री उसकी वहाँ की सबसे फेमस है। तो इस साल का थीम है बी एंगेज, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। तो बीज जो है आपको पता ही है फूड और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्लावर की जो है आपकी फर्टिलाइजेशन में कितना उसका बड़ा रोल होता है। तो बी जो है उसके लिए उसकी आपको इम्पोर्टेंस आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज में की मिटिगेशन करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बी के बिना जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी रहने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is laws on GST. So this topic is important for your polity section and also for your governance section. So recently Supreme Court of India has held that union and state legislatures have equal rights to make
laws on GST. So actually, there was a case when Gujarat High Court ruled that the central government cannot levy IGST on ocean freight from Indian importers. So actually, CBIC was proposing to levy 5% of GST on imported products, but the Gujarat High Court has ruled against it. The importers were complaining that they had to pay 0.5% GST on imported products as services also. Okay, so this was an additional tax also, and they had to pay it time and again as they were moving the imported product in the country. So it was compounding and it was defeating the purpose of GST. So that's why Gujarat High Court has ruled that CBIC cannot impose this 5% tax on products and this 0.5% GST on the services. Okay, so the court has also ruled, the Supreme Court has now ruled that the decision of Gujarat High Court is correct, and the Article 246A of the Constitution says that Union and the states are equal units. They have equal, simultaneous, and unique powers to make laws on GST. Article 279A also says that neither the center nor the states are actually dependent on each other, and they this GST council, if you talk about GST council, even if the union government has a preponderance over GST council, but still it is a collaborative dialogue. The union cannot uh, uh, superimpose its will upon the states. Okay, so GST council recommendations are just recommendatory in nature, they are not binding, so it cannot disrupt the fiscal federalism of the country. Okay, so what will be the impact of this ruling? Of course, GST council recommendations will be taken they will be taken only as recommendations, and they would not be binding, and they would fall under the judicial review of the Supreme Court. Okay, and of course, after this empowering our states, we have also strengthened the spirit of our cooperative federalism. So the next topic is world governance indicators. So this topic is for your governance section. And now the government of India has come into firefighting mode, and they have made a presentation. The Ministry of Finance Economic Division has made a presentation as to how we can improve the World Bank's world governance indicators score of India. Okay, so actually, Finance Ministry realized that there has been negative propaganda or negative commentary on India by global think tanks and media, and this may disrupt or this may hamper our sovereign credit rating, which is of course used by investors to invest in the country. The principal economic advisor also got into the picture, and he made a presentation in June 2020 for internal circulation within the government. So what is this? Because World Bank's World Governance Index has been in news. Let's see what is it. So of course it's an index which ranks 215 countries. It uses 6 dimensions of governance: voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. So basically, these indicators combine the views of a large number of people, citizens, expert surveys, and it also is based upon 30 individual data sources, and it is which is produced by a variety of survey institutes, think tanks, NGOs, etc. And based upon the data collected, this World Governance Index is uh, produced by the World Bank. So the next topic is breeding techniques of barbs. So this topic is for your environment section. So Kerala University of Fisheries and Ocean Studies has standardized the techniques for artificial breeding of olive barbs and filament barbs. So basically, these barbs are the species of fish. They are on the brink of extinction. Why? Because of indiscriminate fishing and the changes in their habitat conditions. So there is also a project for their conservation. So Kerala University of Fisheries and Ocean Studies has taken up conservation measures, and it is supported by the United Nations Development Program and the India High Range Landscape Project. Okay, so the next topic is respiratory syncytial virus. This is a topic for your science and tech section and your social issues also. So a Lancet study has said that almost 1 lakh deaths in children have occurred under 5 years of age worldwide in 2019 due to this lower respiratory infection caused by this RSV. So RSV disease burden in India is about 5.3% in children,
So what is RSV? So it's a human respiratory syncytial virus, and it is also called human orthopneumovirus. It is a very common contagious virus, and it causes infections of the lower respiratory tract. It has a single-stranded RNA, and it causes acute lower respiratory infection in young children. So 26% of RSV associated deaths occur in a hospital globally. So the next topic is interoperable cardless cash withdrawal. So RBI has recently directed all banks and ATM operators to provide cardless cash withdrawal facilities at all ATMs. So it has directed all banks, all ATM networks and white label ATM operators to provide the option of interoperable cardless cash withdrawal at their ATMs. So how it would be done? Of course, UPI would be used. UPI would be used for customer authorization, and the normal transaction would occur. The everything would remain the same. Of course, there would be no need for the cards, because we want to minimize the card usage, because most of the bank's fraud occur due to cards. Okay, when you go for ATM cards, when you use your ATM cards, there is a possibility that the card could be cloned, or that card could be copied. So the government or the RBI wants to eliminate the use of cards. That's why it has introduced this cardless cash withdrawal facility at the ATMs. So the next topic is NASM-SR, that is the Naval Anti-Ship Missile Short Range. So it's an indigenous missile that has been tested by Navy at Balasore in Odisha. So it is developed by the DRDO. It has a range of 55 km and it weighs just 385 kgs. It will replace the Sea Eagle missiles, which are being used by the Navy currently. They will be used with the new MH-60R multi-role helicopters, which have been inducted into the Navy. They will be able to carry a warhead of 100 kg, and they fly below the speed of 0.8 Mach. So they will have a launch altitude of maximum 3 km, and they can skim 5 meters above the sea level. Okay, so but why? So they have a very small warhead size, just 100 kg. So would it be enough to sink ships? Of course, we have seen in Ukraine-Russia conflict that a small missile was able to sink a very big Russian warship. So these small missiles are very effective against patrol boats. But in modern naval conflict, we have seen that even a modest strike by a missile can sink a ship, and because of its small size, it would be easier to carry these missiles by the helicopters and strike from that. Okay. So the next topic is World Bee Day. So this topic is for your environment section and also your economy section. So this World Bee Day has been celebrated recently on 20th May. Union Agriculture Minister has said that the government is working very seriously to bring a sweet revolution in the country. The government has launched this centrally funded scheme, National Beekeeping and Honey Mission, which aims to establish 5 big regional and 100 small honey and other bee products testing laboratories. The government of India is providing assistance, and we are producing about 1.25 lakh metric tons of honey every year. So what is this National Beekeeping and Honey Mission? Of course, it was launched during the Atmanirbhar Bharat scheme package, and it was initially launched for 3 years. 500 crore rupees budget was allocated for this mission. The goal, of course, is to bring a sweet revolution in the country and promote holistic growth of beekeeping industry and generate employment and income for the farm and non-farm households. About the World Bee Day, of course, 20th May is celebrated as the World Bee Day. It was proposed by Slovenia, because Slovenia's beekeeping industry is very famous worldwide. And this year the theme is Bee Engaged, celebrating the diversity of bees and beekeeping systems. So you know that bees are very important for your agriculture industry. They are also contribute to the mitigation of climate change. They are important for your food security, also sustainable agriculture, and a healthy environment and biodiversity. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.